Hello, friends. My name is Salman. I have done BS Honors in Computer Sciences, and along with it, I have done lots of Cisco and Linux trainings. I have been quite a lot background with networks and servers. It's more likely my sixth and seventh year in this industry, and lots of my friends have been saying to me that you should teach English. Lots of people came to me, lots of my fellow students. I've been teaching various subjects from school to high school from a long time. So lots of my students came to me and they say me that, sir, please teach us Linux, teach us some networks. So after lots of like favors and insistings from my colleagues, my fellows, I had finally thought to start online courses of Linux. And yet I'm not going towards Cisco right now. Maybe in little future I will start the CCNA, CCNP classes as well. Maybe up to CCIE exams as well. So it's uh, it's been always great to work with servers. Almost most of the day, most of the time has been like spent in servers. So I would like to have all these opportunities, and yes, I've been it's been great to teach you all of the Linux, but that's not possible. Initially, we're starting with the first course, which is known as Red Hat Certified System Administrator (RHCSA). The course will then will go to the second part of this training, which is RHCE, Red Hat Certified Engineer. Uh, there are Linux is like working with lots of variety. We have to deal with lots of things. We have to deal with really lots of uh, like variation in the everyday task. So it's not something hard and fast. This is not something fixed. It varies from company to company, scenario to scenario. I've been doing jobs with servers from my past 6 7 years. Been working with lots of companies. I've been worked with lots of international companies, lots of companies from Europe, lots of companies from Russia, lots of companies from US. It's from the Middle East market as well, from Saudi as well. Um, so it's been quite a lot of experience I have. That's why people are insisting me, my very dear fellows, insisting me to at least start. So there are lots of students who've been gathered around who were being with me in the online classes. Yes, my few of the videos will be available on YouTube as I'm going to start recording of these lectures. So they will be available on YouTube. They will be not like completely available. Let's say if I put some time on recording videos and recording tutorials, so and recording these lecture, uh, if like students can share my YouTube links, that would be great help. In terms, definitely I have to live. I have family who I have to feed, and uh, yes, I have to bear a lot of pressure from every here. So few parts will be available publicly. Few parts you can like buy lectures from me, or you can like take some online session with me. I don't know what will be the next, but for sure online weekend classes, it will be a group class. It can be a one-to-one class. If you like, you can have a dedicated time slot with me. You can send me an email, and I will get contacted with you. Yes, I will share my email as well. So yet, I think I should have my website or biography. Maybe in upcoming lectures, I will create my website and I will edit
add my contact details over there, but definitely you can. This video will be posted. This is the first video. First few videos will be posted in YouTube. So if you like, please do share with other people. Yeah, help support me. I will be able to support and help all of you. Yet my course is not like just a typical course. The trainer is coming here and teaching you all the way, like just finish the topics and that's all. No, I will actually use the more practical approaches, like the real-time scenarios we have in our environment. So it will not just like the physical book. You are just reading a book. That's why lots of been wasted stuff in there. So we're not going to be part of that. We are actually going to be the part of like more practical approaches. Regarding the instruction, the medium we're reading. Initially these lectures, like right now I'm speaking in English because it's an introduction. That makes an impression. Yeah, but the course will be like taught in Urdu and Hindi. So it's the people from this area of subcontinent will actually be able to understand it more better. Those who have knowledge of Urdu and Hindi will be able to easily understand my lectures. So in my instructional medium will be posted in this. Yes, definitely I will record my lectures in English as well. Definitely. Along with that, I have planned videos on like AWS, learning Amazon, might be the cloud computing. It's a very hot debate right now. Traditional network systems engineer, network admin, system engineer, or you're going to be part of uh, like a DevOps. Right now the culture is trending towards the automation. We will definitely grow, not we will not like keeping our course to the RHCSA and RHCE. There will be a lot more. Then I will, with time to time, I will add my network trainings of Cisco, Microtech, PF Sense. So it will be a lot. It will be not only the like a limited course we have with like the traditional courses we have with most of the almost every institute does it. So it's not like only an institute, it's more about collaboration, sharing of knowledge. Like I help you, you are gonna help me. Yeah. So the videos, those are publicly available. Definitely you can share it up, but when you do it for thing, I prefer to like share my links directly instead of re-uploading them. So that can that saves your time, and that actually helps me in having some more students. And definitely if you like my lectures, you can recommend for other students. We can even arrange the one-to-one meetings for like 15-20 minutes or 30 minutes. We can have set up that some days as well. If you're having some issues, some real-time issues, I will be there to help you. Yes, I've already told most of the time, most of things about me and what I am, what I've been doing, and right now I'm in like just say Germany, and I've been working here. It's just quite new. I'm new here, so might be I'm working here for next few years to grow my career, excel, and embellish my skills. So it will be all great to see that. Yeah, you already had my interview, so let's start about the red hat. So I'm not going to say you that to give an actual exam of the red hat. It's not like I mean personally I didn't give any red hat exam. So when it comes to the job, I don't think nobody sees the RHCSA or RHCE certificate actually.
they will ask you, you know Linux, you know this, you know this, you know how to configure this, do you know what is web, do you know this, do you know this. Oh, it's more like you should have practical experience in order to get job. So my training is to help you in getting job. It's not, my training is not in helping you like you just getting only a piece of paper in your hand. Yes, if you do have spare amount of time, spare amount of money, yes, please do pass the RHCSA and RHCE exam if you do have that. But mostly like students level, they usually don't want to spend much, so my trainings will be like very cheap for students. It will definitely help them and help me myself. So this is all about so the first part, RHCSA, is more about Linux administration. We will learn about Linux from the scratch. And RHCE, the next part will be more like about the servers and security part. We will actually configure servers, lots of servers, and later on we will see more of that, how powerful is a Linux server, what we can do with it. There might be lots of things which are usually not included by any institute in the, of RHCSA or RHCE. So I'm going to teach that as well. As I already told, it's not about just getting an exam to pass off the red hand. It's more about learning. It's more about passion in Linux. If you have passion in Linux, if you have passion in becoming a system admin and a DevOps, the start you will definitely be a system admin. With time to time and experience, you will gain experience. Then you will actually become more of an administrator. uh, Moving to the DevOps culture, yes, and the topics we are going to cover in the RHCSA, there will be few more things added at the time. We will see that. Yeah, hello, welcome to the Linux RSA first introductory class, and it's the difference. The first topic we will discuss today will be the difference between Linux, Windows, and Macs, and it's more about you can say the history of the Unix, or you can say history of operating system, POET operating system. Yeah, it will be like that. Then our second lecture will goes to the installation of Linux, the directory structure of Linux, admin commands, some user management, password, local permissions, backup, network configuration. We will look on software installation. During the software RAID management, there will be an LVM, disk tools, and ACLs. OS kernel, more about kernel modules, the booting process, run levels, password breaking, and grub passwords. Troubleshooting of Linux. There will be few other topics I think I will cover with this, which will be more like practically I might have not mentioned here, but when we like start our courses, we will go lectures to lectures, so we will definitely discussing there. Linux is like huge. I cannot might teach you each and everything, but once you grasp up the thing, uh, that you able to understand the variation from architecture to architecture from different organization using the same things with might have a little different parameters, so it will be glad for you. Okay, let's start with today's lecture. And yes, the instruction of medium is going to be taught in Urdu and Hindi, so I will be changing my pace. It was an intro, so just to make an impression, well, you know that. You got it. So I started in English. Yes, my English is still very good. I know German and I know Russian as well. So they are not like very good level, but like as you already told, I'm in Germany now. So if you speak like German,
with me after a year, I will be like a pro in it. So yes, I do have to attend German classes very soon here. Might be in a month or two. I will start at like B1 level of German. So it will be like that. So to troubleshooting, the last we have this troubleshooting. It's not a fixed task. I might teach you few techniques, but there is a lot of variety in troubleshooting. So we will. It's like quite endless scope in Linux when it comes to troubleshooting. So I will try my best to cover the best practices I've learned from myself, from all these experience. And uh, okay, let's talk about the history of Linux. The Kenneth Thompsons, and Dennis Ritchie. Uh, the founders of C and Java language. Dennis Ritchie is a great scientist, mathematician. It was actually like a physician, physics guy, and mathematician guy at Bell Labs, ET&T. So in 1969 to 1970, the Kenneth Thompsons, Dennis, oh, don't mind, it's just like history, so that's why I've just arranged this document. So I don't have to like search for this. I have few points remembered in my memory, so definitely I cannot remember that all. So don't worry, it's just the introductory lecture, and I've been like not every lecture will be like that. Our next lecture will be very more interesting. The first one is boring, yes, because history and evolution. So before going deep inside Linux, we should know that what is the history behind the Unix and the Linux and Windows and Mac. As we already told, our today's topic is difference between Linux, Windows, Mac, history of Unix, history of operating system. So before going into this field deep down, you should know you should I know in fully depth, but you should have some basic like, oh, someone questions you in interview, oh, when Unix is founded, where it was founded, and who was the founder. So it's Ken Thompson, Dennis Ritchie, with Bell Labs, AT&T, US. So you should actually know these things. Now you don't know what it happens next. Yeah. So in 1969, 1970, Kenneth Thompson, Dennis Ritchie, the founder of C language, I've already told, and the founder of Java. Dennis Ritchie is a brilliant mind. He is also known the father of IT, and others at Bell Labs. There was a team at Bell Labs. AT&T is the part of Bell Labs at that time. Later on, they separated. Yeah, began developing a small operating system on a little used PDP-7. The operating system was soon christened Unix. Upon an earlier operating system projects called Multics in 1972 to 73, the system was rewritten in the programming language C. In 1972 to 97, the system was rewritten in the programming language C. So it was earlier started with this PDP, the Unix, the small operating system, and then in 1972 to 1973, Ken Thompson, Dennis Ritchie, uh, their team actually, they were actually the pioneers of the C language and later the Java language, and they have like rewritten the whole operating system. An unusual step that was visionary. Due to this decision, Unix was the first widely used operating system that could switch from and outlive its original hardware. Other innovations were added to Unix as well, in the part due to synergies between Bell Labs and the academic community. In 1979, the 7th edition, version 7 of the Unix was released, the father of all the extant Unix system. So this is all about history. Yeah, let me add a few points here. In 1969,
This project was actually the USA Army project. The USA Army have the various divisions like NSA, National Security Agency, the CIA, FBI, Pentagon. So this project was actually initiated by NSA of the US Army, and it was for into like in 1960, 1970, it was like used within the US Army. They later thought when things were going in like version 1, version 2, you're seeing here in 1979 it's gone to version 7. So US Army later said that because the project was costing them a lot, so they were first using within them, and later they actually sold to a few other countries of this, and their operating system they have earned a lot, like I don't know but amount they sold it out. So it was like that. They have earned a lot with it, and later in 1984 the Richard Stallman, the Free Software Foundation FSF, began the GNU GNU project, a project to create a free version of the Unix operating system. By free, Stallman meant software that could be used freely used, read, modified, and redistributed. Yes, the open source term open source is actually the major contribution of Richard Stallman in 1984. The FSF successfully built a vast number of useful components, including a C compiler. Yes, GCC we know in the Linux right now. We've been using Students have been using it in Dev C++, MakeW, and lots of such stuff. And their student here, an impressive text editor, Emacs, and host of fundamental tools. However, in 1990, the FSF was having trouble developing the operating system kernel. FSF 1998. Without a kernel, the dream of a completely free operating system would not be realized. Yes, there like initially uh, the project that AT&T, the Bell Labs AT&T had led this Unix project was actually not to the public, as I already told. It was uh, it was with the US Army. It was with the US Army, and later US Army sold to a few other countries, but it was like not uh, available to distribute to every end user. So it was not free, it was like pay. So Richard Stallman had done some great job with FSF and the Free Software Foundation. Yes, later Dennis Ritchie and Ken Thompson, as Dennis Ritchie at the time, they're going to wind up like things with Bell Labs separated from AT&T. So the good thing they have done, Dennis Ritchie and Ken Thompson have done at the end of all of this with Richard Mann, and they actually made the Unix free available version, like it's become open source. So this was like they might have like a bad idea for company because the company were like earning a lot, but I think it is the good decision, because if the Unix operating system is still like be the part like right now in 2017 it's being the part of Bell Labs, so or AT&T, uh, it could only grow up to that level which only AT&T developers or developers they hire, programmers they hire, or the think tanks they hire could actually build. So we today we even not might like see Linux, we might not see Mac, we might not see Windows uh, if this Unix project didn't go on open source. So yes, I'm taking this like history in English, so don't worry. Lectures will be moving to Urdu and Hindi. So it's because all of this English text, I'm actually like addicted to English, speaking in English. Yeah. So AT&T
has been later forced to open source Unix. So it was also the contribution of Dennis Ritchie and Ken Thompson. So it was actually a good move. Now today we have to see like Mac, we have to see Windows. The operating system industry has progressed a lot as the Unix becomes open source. So Unix is known as the mother of IT. There's no doubt. As initially AT&T, Sun, IBM, HP, Tandem, Berkeley University, Digital were the contributors in developing the Unix kernel, actually developed by Ken Thompson and his team. But later, as it becomes open source, lots of people, lots of like genius minded, brilliant physicians, mathematicians have been took part on just developing the platform, and they have been like done amazing things in this computer era. After Unix became more mature, the source code had to be shared between the above said companies as they wanted to file their own patent. And you see the Unix tweak to each of their own patented RISC hardware, and so it came out the Unix patented OS like IBM AIX, Sun Solaris, HP, UX, Digital through 64, etc. So it was like they have their own, every company had their own patent Unix, which was not available open source. So, and that is the reason you see the core commands is similar. However, Berkeley University had developed the Unix close to the x86 hardware, which was an Intel 32-bit architecture, and it is called the BSD, FreeBSD, OpenBSD, TrueBSD project. Yes, later after the things gone open source world and as FSF Foundation and Open Source Fund was formed, and things going that way. So in 1991, Linus Torvalds, the creator of Linux kernel, Linus Torvalds began developing an operating system kernel which he named Linux. Torvalds 1999. This kernel could be combined with the FSF material and other components, in the particular some of the BSD components and MIT X Windows software, to produce a freely modifiable and very useful operating system. This book will term the kernel itself like the Linux kernel and the entire combination as Linux. Note that the many of the term of GNU Linux instead for this combination. Yes, it was the major contribution of Linus Torvalds, who is actually the creator of Linux kernel, because there was a problem. If you look a little back, without a kernel, a dream of the free operating system would not be realized. So this issue is actually solved by the Linus Torvalds in 1991 when he created the kernel. He actually invented the kernel. He's the creator of it. So founded in 1993. Yes, the Red Hat. Actually, there are lots of other distributions, other in Linux. We will talk about that after this. So Red Hat has its corporate headquarters in Raleigh, North Carolina, with satellite offices worldwide. Red Hat has become associated to large extent with its enterprise operating system, the Red Hat Enterprise Linux. Yes, then after 1991, the 1993, the Red Hat has formed, and the course actually we will start here. So let's come. We've been like reading this whole few lines. Yes, it's all about history of Linux and Unix. So now let's come to our original language in Urdu and Hindi, and let's explain. जी बिल्कुल, लिनक्स की हिस्ट्री के ऊपर हमने काफ़ी बात की है, और सी को मज़ीद इस पैराग्राफ, क्योंकि इंग्लिश में थे इसलिए मैं उसको इंग्लिश में ही पढ़ के थोड़ा सा इंग्लिश में इलेबोरेट कर रहा था. अब हम अपने एक्चुअल ज़ुबान में आते हैं, और जिसमें हमारे सारे लेक्चर्स कंटिन्यूड होंगे, हमारी ट्रेनिंग्स कंटिन्यूड होंगी, और यूनिक्स और उसकी स्टार्टअप, हमारे इन चीज़ों का हमें पता चल गया है. हमने डेनिस रिची और केन थॉमसन के बारे में जाना, सी लैंग्वेज के क्रिएटर के बारे में आज हमें पता चला इस
लेक्चर से। डेनिस रिची जो है वो सी और जावा का क्रिएटर है, और इसमें इसकी मदद केन थॉम्सन और कुछ जो इनकी टीम थी उस टाइम पे उसके साथ की है। बट और जिस कंपनी के साथ ये लोग काम करते थे वो AT&T है, यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत ही मशहूर कंपनी है, आज भी लोग उसे जानते हैं। और ये एक्चुअली कंपनी बेल लैब्स का पार्ट थी एक टाइम पे। नाउ दे आर एन इंडिविजुअल एंटिटी, बेल लैब्स, गूगल कर लीजिएगा। बहुत ही बेल लैब्स मशहूर है अपनी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए। सो द इन सब का जो एक्चुअल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक वी कैन मदर है वो है यूनिक्स। और यूनिक्स से ही लेटर जब यूनिक्स ओपन सोर्स हुआ उसके बाद लाइनस ने जो लिनक्स का कर्नल लिखा, और एफ जो फाउंडेशन है उसने ओपन सोर्स चीज़ों को जो है उसको GNU प्रोजेक्ट और ओपन सोर्स और फ्री चीज़ों को अवेलेबल किया। और डेनिस रिची की ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, कैन थॉम्सन और डेनिस रिची का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि वो इस प्रोजेक्ट को एंड पे एक टाइम पे यानी कि एक मोमेंट पे आके उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स कर दिया, इस प्रोजेक्ट को इसके सारे सोर्स कोड को फ्री कर दिया फॉर द वर्ल्ड वाइड। और अगर ये ऐसा ना करते तो शायद लिनक्स, विंडोज़ और मैक फॉर्म ना होते, और शायद आज हम मोबाइल में, अपनी स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप्स में ये मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद आज हम इतनी जितना देखते हैं, क्योंकि फिर प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो लाइक वर्ल्ड वाइड हो गया। उससे पहले ये प्रोजेक्ट लाइक यूनिक्स सिर्फ उतनी ही तरक्की कर सकता था जितना के दिमाग जिसे कहते हैं ब्रेन्स थे, बेल लैब्स हायर कर सकता था, या उन लोगों का जितना दिमाग था वो सिर्फ उतना ही कर सकते थे। तो यही वो फ़ायदा हुआ है। और शायद डेनिस रिची इस चीज़ को प्राउड भी लिटरल फील करते होंगे when Windows, Macs और Linux like Red Hat, Ubuntu, Debian and lots of such things are involved Linux kernel में Linus Torvalds की contribution, और भी बहुत सारे लोगों की बहुत बहुत जगहों पे कंट्रीब्यूशन है, नेटवर्क्स की कंट्रीब्यूशन है, नेटवर्क टीम्स की, माइक्रो आर्किटेक्चर्स में, सीपीयूज में इंटेल और एएमडी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। दुनिया जानती है इन्हें, इन बोथ वेंडर्स को। एएमडी और इंटेल बहुत ही मशहूर वेंडर्स हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के। सो इट वाज नॉट लाइक अ single person game, it's like a team game. So Unix, it's a mother of IT। इससे एक चेन हमारे पास लिनक्स की निकली है। One of the operating systems we have it's Mac, and one of the operating systems we have is Windows. Yes, Windows. I'm using Windows. Every person uses Windows almost. Yeah, because Macs are expensive, although Macs are very good. So Linux is actually the bit modified form of the Unix. They have like its own kernel, उनका कर्नल अपना है। थोड़ी माइनर डिफरेंसेस, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है लिनक्स और यूनिक्स में, बट इनका फाइल सिस्टम का फ़र्क है। और यूनिक्स के कुछ अपने फाइल सिस्टम है, लिनक्स के अपने फाइल सिस्टम है, और बाकी ऑलमोस्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे से। यूनिक्स में हर चीज़ तकरीबन क्या लें, अगर आप फ्री BSD वगैरह की बात करें जो एक्चुअल में यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो हर चीज़ कंपाइल इंस्टॉल करते हैं। लिनक्स में कंपाइल इंस्टॉल भी होता है और बिल्ट इन बाइनरीज भी मिल जाती हैं, सो दैट मेक्स इट अ बिट फास्टर। ठीक है, और लाइक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ है लिनक्स में, चीज़ें बहुत जल्दी ग्रैप्स कर रही हैं। इन यूनिक्स उसमें भी है, बट थिंग्स आर बिट स्लो in Unix, but still it's the mother of IT, and इसी तरह चीज़ें चलती रही हैं। इसी तरह Unix एक्चुअल में मैक भी एक यूनिक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है, बट यूनिक्स यूजुअली उसके ग्राफिक्स वगैरह नहीं थे, तो मैक ने और जब स्टीव जॉब्स
and the Mac team have Apple team have done great things in terms of graphics. और इसका जो फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर है वो सेम यूनिक्स पे बेस करता है, बट दे हैव मॉडिफाइड, उन्होंने बहुत सी चीज़ें मॉडिफाइड कर दी हैं यूनिक्स की। और इन टर्म्स ऑफ अगर आप ग्राफिक्स में बात करें तो मैक इज़ लाइक देयर इज़ नो मैच इन मैक्स MacBooks. Apple MacBooks are just great, especially और जो उन्होंने रेटिना अपना पेटेंट किया हुआ है, iPads रेटिना, आईफोन iPads में जो रेटिना है और इनकी जो मैक रेटिना है, दे आर क्वाइट ऑसम। सो ग्राफिक्स मशीन में मैक का कोई मुकाबला नहीं। येट विंडोज़ is a very modified Mac is like very similar to Unix, but जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ग्राफिक्स की बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हुई है मैक में। यूनिक्स में ऐसे ग्राफिक्स की इतनी एवोल्यूशन नहीं है, लाइक फ्री BSD is all like command line. I don't know if there is a like a graphical interface of FreeBSD or OpenBSD. I don't know that. I didn't use them at all very much. Just I've used FreeBSD command line, very rare because of the PF sense. यस, और विंडोज़ मैक और विंडोज़ दो बहुत इस टाइम लाइक बिगेस्ट कंपिटिटर्स हैं। लिनक्स तो खैर सर्वर इंडस्ट्री में टॉप पे हैं। लिनक्स में लाइक इफ यू हैव you say like you have 10,000 servers, so more than 9,000 servers are of Linux. Might be just 500 or 1,000 or even less than will be the Windows server, because Linux is more stable. एंड लिनक्स को विंडोज़ के कंपैरिजन में जो लिनक्स की जो सबसे बड़ी खूबी है वो उसकी ट्रबल शूटिंग है। ट्रबल शूटिंग लिनक्स और यूनिक्स में बहुत ज़बरदस्त है, और यूनिक्स खुद इट्सल्फ बहुत ज़्यादा स्टेबल आर्किटेक्चर है, बहुत ही स्टेबल है, इसलिए क्योंकि मैक यूनिक्स के कोर के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस करता है। ऑल्दो उन्होंने काफ़ी कुछ मॉडिफाई किया है, इसलिए मैक भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। विंडोज़ ने बल्कि ऐसा नहीं किया। विंडोज़ मैक लिनक्स में या यूनिक्स में एक्चुअल में अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, हम बात करें कुछ भी हमने इंस्टॉल किया, हमने लेट्स से पेंट इंस्टॉल किया या वर्ड इंस्टॉल किया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हमने वो इंस्टॉल किया है तो उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर लिखी जाती हैं। ठीक है, वो कुछ भी आप उस वो कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर लें, उसको माइनर अमेंड कर लें, दैट्स फाइन। विंडोज़ ने एक्चुअली इस आर्किटेक्चर को चेंज किया। विंडोज़ यूनिक्स से बहुत ज़्यादा हटके इन्होंने फाइल सिस्टम बहुत ही डिफरेंट कर दिए हैं अपने फाइल सिस्टम ने। लाइक विंडोज़ ने समझ लें कंप्लीट री राइट किया, और इस कंप्लीट रीराइट के चक्कर में विंडोज़ ने एक चीज़ अपने सिस्टम में ऐड की, बहुत सारे लोग उससे वाकिफ़ होंगे। विंडोज़ की एक रजिस्ट्री होती है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले लें, वो 95 था, वो 98 है, एक्सपी है, मी मिलेनियम है, 2000 प्रोफेशनल है, विंडोज़ 7 है, विस्टा है, 8 है, 8.1 है, अब विंडोज़ 10 है। ठीक है, तो ये इन्होंने एक अपना रजिस्ट्री सिस्टम रखा। इन्होंने लाइक ए ट्रेडिशनल वो जो फाइल बेस्ड यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी आपने अपाची इंस्टॉल किया है, आपने nginx इंस्टॉल किया है, और वो अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फाइल में लिखने की बजाय विंडोज़ ने क्या किया, विंडोज़ ने वो कॉन्फ़िगरेशन उठा के एक अपना एक रजिस्ट्री सिस्टम बनाया और उसमें रखनी शुरू कर दी। आई डोंट नो माइक्रोसॉफ्ट की इसके पीछे और बिल गेट्स की क्या लॉजिक थी वो रजिस्ट्री सिस्टम इन्वेंट करने की, कि वो यूनिक्स से और लिनक्स और मैक से डिफरेंट हों। सबसे इसमें कोई शक नहीं, विंडोज़ बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, इंटरफेस बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है इसका, और यही वजह है कि वो आज सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल होती है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होम यूज़र्स पे, एंड यूज़र्स पे, तो वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, एंड यूज़र की मैं बात कर रहा हूँ। मैक जो थोड़े लाइक के जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं, थोड़ा का क्लास रखना चाहते हैं जी, वो मैक यूज़ करते हैं।
So that's good, but Mac is really really good because apart from class, if you can like Macs are a bit expensive. Like for example, if you can buy a good laptop of 500 or $600 for Windows, um, when it comes to Mac it's like $1,500. So ये भी कुछ वजह है कि विंडोज़ लाइक बहुत सस्ती मिल जाती है मैक की निस्बत। मैक काफ़ी महंगा है, तो बस जो मैक को अफोर्ड कर सकते हैं वो मैक रखते हैं। लिनक्स तो खैर सर्वर के अंदर बादशाह है। लिनक्स का डेस्कटॉप एंड्स पे इतना अच्छा यूजेज नहीं है, ऑल दो यूबंटू ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इसके डेस्कटॉप इंटरफेस ने। वो पहला और ही शायद ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स फिडोरा का भी इंटरफेस बहुत अच्छा है, डेबियन भी अपना ग्राफिकल इंटरफेस दे रहा है, लेकिन लाइक यूबंटू ने बहुत अच्छी मैक के बाद कोई अगर ग्राफिक्स में यूनिक्स और लिनक्स स्टैंडर्ड में कोई फॉलो करता है इसके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यूबंटू है मेरे ओपिनियन में। और यूबंटू क्लाइंट साइड पे भी पॉपुलर है, यूज़ होती है बहुत सारे कंट्रीज़ में और ऑर्गेनाइजेशंस में लाइसेंसिंग कॉस्ट को विंडोज़ की बचाने के लिए। जहाँ पे ज़्यादातर काम लिनक्स का है तो वो यूबंटू भी यूज़ करते हैं। अगर वो कंपनीज लाइक स्मॉल स्केल की हैं, वो मैक को नहीं अफोर्ड कर सकती, तो वहाँ पे यूबंटू वाइडली यूज़ होती है। तो विंडोज़ का जो रजिस्ट्री सिस्टम की बात हो रही थी, वही मैं समझता हूँ शायद विंडोज़ का सबसे बड़ा फ्लॉ भी इनका वो रजिस्ट्री सिस्टम है कि वो फाइल बेस्ड कन्फिग्रेशन से उठ के एक रजिस्ट्री सिस्टम पे आए। हाँ शायद वो अपने लाइसेंसिंग और कुछ इस तरह के पैरामीटर्स को माइट भी वो करना चाहें, बट मैं किसी के नेगेटिव साइड्स पे नहीं हूँ कि जी मैक बहुत अच्छा है विंडोज़। इट्स जस्ट मेरा अपना ओपिनियन है कि इनका रजिस्ट्री सिस्टम, क्योंकि लाइक जो टूल बार्स इंस्टॉल हो जाते हैं समटाइम, दो आई एम वेरी केयरफुल। मेरी विंडोज़ अल्लाह का शुक्र है कि बहुत स्टेबल रहती है। थैंक्स गॉड इट्स ऑल स्टेबल विद मी, आई नो हाउ इट्स। मैं हमेशा सॉफ्टवेयर कस्टम इंस्टॉल करता हूँ, देखता हूँ कोई यार टूल बार ऐड ऑन कोई एडिशनल तो नहीं इंस्टॉल हो रहा। तो विंडोज़ का जो सबसे बड़ा मसला, अगर रजिस्ट्री एक बारी करप्ट हो जाए या इन्फेक्ट हो जाए, कोई मालवेयर घुस जाए और वो रजिस्ट्री के साथ काफ़ी छेड़छाड़ कर दे और विंडोज़ थोड़ा आहिस्ता मिसबिहेव करना शुरू कर देती है, अगर विंडोज़ की रजिस्ट्री में इश्यूज आने शुरू हो जाएं, तो देर इज़ ऑलमोस्ट लाइक आइदर यू नीड टू बी अ वेरी एक्सपर्ट इन लुकिंग अप रजिस्ट्री, तो वो कुछ ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें इतनी आपको ट्रबल शूटिंग नहीं मिलती है। और अगर कुछ गलत कन्फिगर हो गया, माइट भी शायद आप विंडोज़ को नेक्स्ट टाइम बूट ही ना कर सकें अगर। और माइक्रोसॉफ्ट खुद कहता है कि जी अगर रजिस्ट्री में मसला आ जाए, रजिस्ट्री करप्ट हो जाए या बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए या मालवेयर इन्फेक्टेड हो जाए, तो यू जस्ट हैव टू री इंस्टॉल द विंडोज़। सो यही इसका एक सबसे बड़ा जो है डाउन साइड है कि वो रजिस्ट्री जो है ना उसकी रिकवरी, आइदर उसका बैकअप है तो ठीक है, आप एक स्टेट का बैकअप है, आप उस स्टेट पे रजिस्ट्री को रीस्टोर कर दें, देयर आर मेथड्स फॉर दैट। तो आपकी बस आपकी यार वैसे की है। वरना अगर बहुत ही बुरी हालत हो जाए विंडोज़ की तो बस समझे आपने उसको री इंस्टॉल करना है। तो लिनक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, इट्स वन आवर बहुत है। लिनक्स काफ़ी पॉपुलर हुआ टाइम पे आते आते। लिनक्स के बहुत सारे लाइक वेरिएंट्स आए, एक रेड हैट है और इसके अलावा यूबंटू है, उबंटू और यूबंटू whatever you like to pronounce, डेबियन है। इसी तरह ओपन सोर्स है, देर आर फ्यू अदर डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेड हैट जो है वो सब इन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो सब इंडस्ट्री में हुई और जिस कोर्स को जिस स्टैंडर्ड को पढ़ाया जाता है वो रेड हैट है। आइदर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है रिगार्डिंग जो यूबंटू है वो डेबियन बेस्ड है एक्चुअल में। और एक्चुअली ज़्यादातर दो ही क्लासिफिकेशन है, आइदर सॉफ्टवेयर आरपीएम बेस्ड हैं, आइदर सॉफ्टवेयर डेबियन बेस्ड हैं। तो जस्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी 99% सेम है, माइट भी कुछ पाथ्स का फ़र्क है उन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस में। और बट 95 to 99% tasks are same in Debian or Ubuntu as in the Red Hat।
तो रेड हैट जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसकी पॉपुलैरिटी रही, और इसी वजह से रेड हैट को हम एज अ कोर्स में पढ़ाते हैं। रेड हैट जब भी लिनक्स की बात हो हम रेड हैट की ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ट्रेनिंग्स में इसकी हैं, और यूबंटू के भी अपने कुछ कोर्सेज हैं, ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो इंडस्ट्री में पढ़ाया जाता है वो रेड हैट ही है। और रेड हैट इट्स अ पेड है, वो भी है। हम लिनक्स और ओपन सोर्स की बात कर रहे थे, अब आप कहेंगे जी रेड हैट पेड है। जी बिल्कुल, रेड हैट पेड है। रेड हैट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है RHEL के नाम से, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स जिसे कहते हैं हम, EL, EL5 वर्जन 5, EL6 एंटरप्राइज लिनक्स 6, और EL7 अब एंटरप्राइज लिनक्स 7 है इस टाइम पे नया। तो ये बिल्कुल ये पेड है, ये इसका लाइसेंस होता है, और ये लाइक फ्री नहीं है टू यूज़। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बट इसका ये है कि इसका सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर वगैरह इट इज़ लाइसेंस्ड, तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी ओपन सोर्स की बात हो रही है, आप थोड़े परेशान होंगे यार ये रेड हैट आए हैं तो ये तो साथ ही पेड हो गया है, तो विंडोज़ में और रेड लिनक्स में क्या फ़र्क है। लिनक्स की एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी खूबसूरती ये है कि कोई भी चीज़ अगर वो उसका पेड है तो उसका सेम एग्जैक्ट डिटो कॉपी या वेरी सिमिलर और कोई ना कोई फ्री वर्जन होगा। तो इसी चक्कर में रेड हैट ने खुद एक अपनी ही दूसरी प्रोडक्ट निकाली हुई है जिसको हम कहते हैं फिडोरा, FEDOR है फिडोरा। बिल्कुल, फिडोरा जो है वो भी रेड हैट का ही प्रोडक्ट है। ये डेस्कटॉप बेस्ड में यूज़ होता है, डेस्कटॉप क्लाइंट एंड्स पे, सर्वर एंड्स पे इसको नहीं इतना यूज़ किया जाता बिल्कुल। लेकिन ये वर्जन फ्री है फिडोरा इनका, जो रेड हैट ऑफिशियली दे रहा है। और रेड हैट की ही टीम, यानी कि वही टीम, उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स लाइक नॉट द पार्ट ऑफ रेड हैट, लाइक एंटरप्राइज लिनक्स और फिडोरा जो है वो रेड हैट का पार्ट है ऑफिशियली, इट्स नॉट अ रेड हैट पार्ट। दे कॉल इट सेंट OS, सेंटोस के नाम से ये बड़ा पॉपुलर है। एंड इट इज़ एग्जैक्टली 100%, मैं 99.9 भी नहीं कहूँगा, इट इज़ एग्जैक्टली 100% क्लोन ऑफ एंटरप्राइज लिनक्स। सेम टीम है, उन्होंने यही प्रोडक्ट 100% सेम, जिसे कहते हैं ना डिट्टो क्लोन है। और बस इसका ये है कि सेंटोस जो है वो आपको फ्री है, उसमें कोई लाइसेंसिंग जो है वो शामिल नहीं होगी। इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री, यू कैन सेम उसी तरह वर्जन 5 अब तो है डेप्रिकेट हो गया, वर्जन 6 जो है वो 2020 तक नियरली इसकी एंड ऑफ लाइफ है। और उसके बाद वर्जन 7 है। हम जो भी कोर्स में चलाएंगे वो वर्जन 6 है, और प्रैक्टिकल अप्रोच में लेके जाएंगे वर्जन 6 और वर्जन 7 में क्या फ़र्क है, तो उसके ऊपर भी बात होगी। ठीक है, बड़ी हॉट डिबेट है, वो भी हम आगे करेंगे। वर्जन सेंटोस और रेड हैट के वर्जन 6 और वर्जन 7 में क्या फ़र्क है, डेबियन 7 और 8 में क्या फ़र्क है, और यूबंटू 14 और 4 जो प्रीवियस लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज़ थी इनकी, और नई जो 16.04 है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, उसमें क्या फ़र्क है। तो वो जो मेजर चेंज आई है ये इन वर्जन्स के अंदर, उसको हम देखेंगे। बट सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले आपको ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स नज़र आएंगे। रेड हैट EL भी यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री में, लेकिन नॉट लाइक कि काफ़ी रिच ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो लाइक पेड सपोर्ट लेना चाहती हैं, ठीक है, वो रेड हैट से, और वो किसी भी किस्म का रिस्क कर्नल वाइज सिक्योरिटी वाइज वो नहीं लेना चाहते हैं, तो वो RHEL की लाइसेंसिंग के ऊपर जाते हैं। ठीक है, बट अगर आप सेंटोस पे काम करना चाहते हैं, एग्जैक्टली वही काम उसी तरह ही एंटरप्राइज लिनक्स पे होगा। देर इज़ नो डिफरेंस, आई एम स्टिल टेलिंग देर इज़ नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं है। ये उसका एग्जैक्ट डिटो क्लोन है। तो हम जो OS यूज़ करेंगे अपने कोर्स में वो सेंट OS है, ताकि हमें जो पैकेज मैनेजर है, आल्दो उसका भी सोल्यूशन है, थर्ड पार्टी रेपोज को आप शामिल करके काम कर सकते हैं। बट स्टिल आई थिंक वी विल गो विद ओपन सोर्स, वी विल गो विद फ्री। सो वी विल यूज सेंटोस 6 और लेटर सेंटोस 6 और सेंटोस 7 में जो मेजर चेंज है वो बताएंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम, सेम कमांड, सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, यूबंटू डेबियन सेंटोस रेड हैट का सेम डायरेक्टरी, फिडोरा समेत सबका सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है।
वो पैटर्न नहीं चेंज होता लिनक्स के अंदर। तो यही सब जो है चल रहा है हमारे पास। और यूबंटू भी ग्राफिक्स के मामले में, मैक के बाद अगर मुझे किसी के ग्राफिक्स अच्छे लगते हैं तो वो यूबंटू, नो डाउट दे हैव रियली वर्क हार्ड। उसके बाद अगर मैं किसी को प्रेफर करूँगा तो वो विंडोज़ है हमारे पास। विंडोज़ इज़ लाइक क्वाइट लॉट गुड। तो उसके बाद डेबियन भी काफ़ी ज़्यादा, यूबंटू एक्चुअली डेबियन का ही एक डिराइव्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डेबियन जो है समझ लें यूबंटू का पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बट उन्होंने काफ़ी कुछ मॉडिफाई कर दिया। डेबियन ने इतना ग्राफिक्स और उस पर नहीं काम किया। बट server side पे I think Debian might be more stable. Is more stable. They like work on security fixes much better than Ubuntu. Sometimes gets lazy on fixing few patches because ये भी है कि वो Ubuntu अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का रिलीज साइकिल बहुत जल्दी निकालता है। और Debian Debian उतना जल्दी नहीं निकालता अपना रिलीज साइकिल। सो ये है कि वो कहते हैं जी आप अपग्रेड कर लें ऑपरेटिंग सिस्टम में और नेक्स्ट LTS पे ले जाएं तो उस पर हम चीज़ें फिक्स कर देते हैं। बस वो ये है कि हर कंपनी टू कंपनी उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, तो हम किसी को भी अच्छा बुरा नहीं कह सकते। हर बंदा, इट्स फ्री विल वर्ल्ड और हर बंदा अपने लिहाज से सोचता है, बट सोचना अच्छा चाहिए। तो ये रही सारी आज हमारी हिस्ट्री, एवोल्यूशन यूनिक्स से लिनक्स, मैक और विंडोज़ तक का जर्नी। विंडोज़ आज भी सबसे ज़्यादा डेस्कटॉप पॉपुलर है, मैक एक्सपेंसिव है, लिनक्स सर्वर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आजकल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और रेड हैट की बात हुई 1993 में फॉर्म हुई थी। और इनके दो ऑफिशियल फ्लेवर्स हैं, एंटरप्राइज लिनक्स जो कि लाइसेंस्ड है, और फेडोरा जो कि फ्री है। डेस्कटॉप यूजेज या फेडोरा कम सर्वर्स पे नहीं यूज़ करते बिकॉज ये एक्चुअली सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इट्स जस्ट अ डेस्कटॉप बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर बेस में हम इसलिए सेंटोस पे आ जाते हैं। और सेंटोस रेड हैट का 100% क्लोन है, फ्री क्लोन है, आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। और यही वजह है कि रेड हैट पेड है, हर बंदा उसको नहीं यूज़ करता। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि लिनक्स में अगर कोई चीज़ पेड है तो उसका आपको कोई ना कोई फ्री ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। तो समझ लें एंटरप्राइज लिनक्स का 100% क्लोन ये सेंटोस फ्री अवेलेबल है। हम अभी सेंटोस 6 की इंस्टॉलेशन अपने सेकंड लेक्चर में कल देखेंगे। और सेंटोस इज़ लाइक ए सेंटोस, डेबियन और यूबंटू, ये तीन ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको प्रैक्टिकली हर दूसरे सर्वर में, अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आपसे पूछेंगे यार आपको सेंटोस या रेड हैट पे काम करना आता है, ठीक है, या आपको डेबियन पे आता है या आपको यूबंटू पे आता है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें। जो डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे। तो उसके साथ ही आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर हिस्ट्री थी, थोड़ी सी बोरिंग, बट वही मैंने कहा बताया जैसे कि कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो कल से इंस्टॉलेशन है, इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं कल के बहुत। वो मेरा सेकंड लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा इस टर्म में आज, क्योंकि मेरा इंट्रो था। और मैं थोड़ी हिस्ट्री और ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकग्राउंड के ऊपर बात करना चाहता था, तो वो मैंने किया है। तो कल मिलते हैं अपने दूसरे लेक्चर में। ठीक है, दूसरा लेक्चर होगा हमारे पास लिनक्स इंस्टॉलेशन में। बिल्कुल कल हमारा सेकेंड टॉपिक लिनक्स इंस्टॉलेशन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके बाद टॉपिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। सो हिस्ट्री इज़ ऑलवेज बोर, सो इफ आई गेट यू बोर आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, but it's good. See you tomorrow. Have a nice day. Thank you.